Assalamu alaikum. My name is Faizan Ali with my group members Hussein Ali Sheikh, Khizr Hayat एंड मोहम्मद तलहा। आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट 1984 में एलिस जाफरी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। बेसिकली उन्होंने एक टेक्निक ईजाद की थी जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया था कि कैसे हम डीएनए ह्यूमन डीएनए में डिफरेंट वेरिएशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, और इस होल प्रोसीजर को उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम दिया था। फिर 1985 में डॉक्टर कैरी म्यूलिस ने पीसीआर टेक्निक इन्वेंट की थी। व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक केमिकल टेस्ट है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट जेनेटिक प्रोफाइल बनाई जाती है। उस प्रोफाइल को यूज़ करके हम उस ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं और कम्प्लीटली डिफरेंट प्रूव कर सकते हैं। ये प्रोफाइल कोर्ट्स में यूज़ होती है ताकि किसी भी बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो सके, उसके रिलेटिव्स का पता लगाया जा सके और हॉस्पिटल में ये प्रोफाइल मोस्टली डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। प्रोसेस मेथड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग: नंबर 1 collection of biological sample, number 2 DNA extraction, number 3 restriction digestion of PCR amplification, number 4 agarose gel electrophoresis for separation of DNA fragments, number 5 interpreting results। सैम्पल कलेक्शन: डीएनए का सैंपल हम बॉडी के किसी भी रीजन से ले सकते हैं, और डीएनए एक्सट्रैक्शन में ये बेसिकली दो मेथड यूज़ होते हैं, CTAB एंड फिनोक्लोरोफॉर्म डीएनए एक्सट्रैक्शन। CTAB जो होता है उसमें ये होता है कि प्लांट से डीएनए जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें ये मेथड यूज़ होता है। इसमें हम क्लोरोफॉर्म आइसोमेल अल्कोहल मिक्सचर यूज़ करते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है न्यूक्लिक एसिड को एक्वस फॉर्म में लाने के लिए। फिनोल क्लोरोफॉर्म डीएनए एक्सट्रैक्शन में ये होता है कि या तो हम फिनोल यूज़ करते हैं और या फिर क्लोरोफॉर्म, और इसमें ये होता है कि हम डीएनए को प्रोटीन से सेपरेट कर देते हैं। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन और पीसीआर एम्प्लीफिकेशन: इसमें 3 प्रोसेस यूज़ होते हैं, आरएफपी एनालिसिस, पीसीआर एनालिसिस और रियल टाइम पीसीआर एनालिसिस। RFLP एनालिसिस, RFLP बेसिकली स्टैंड फॉर रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये पहला मेथड है डीएनए एक्सट्रैक्शन का। इसमें यह होता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के स्मॉल पीसेस कर देते हैं, उन स्मॉल पीसेस को उनकी लेंथ के हिसाब से सेपरेट किया जाता है, फिर उन्हीं स्मॉल पीसेस को जो सेपरेट हो जाते हैं उनको नाइलॉन मेम्ब्रेन में भेज दिया जाता है। वहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोब्स डीएनए के साथ अटैच होकर एक डार्क पैटर्न बनाते हैं, और उस डार्क पैटर्न को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम देते हैं। फिर वो फिंगरप्रिंट्स कंपेरिजन के लिए भी यूज़ होते हैं या फिर रिसर्च बेसिस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। पीसीआर बेस्ड एनालिसिस: पीसीआर बेस्ड एनालिसिस भी सेम ही है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है इसमें कि जिस तरह हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करके डीएनए के स्मॉल पीसेस करते हैं, इसमें पॉलीमराइज चेन रिएक्शन होता है और एक स्पेसिफिक एसटीआर शॉर्ट टेंडम रिपीट्स की कॉपीज़ बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। पीसीआर एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर होता है जिसमें हम एक डीएनए की सीक्वेंस की बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए बस स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए की ज़रूरत होती है और उसके बाद बस ये कॉपीज़ बनाता जाता है। That's all from my side. Now Hussein Sheikh will come forward to share some information with you regarding preparation of gel, etc. Assalamu alaikum. My name is Hussein Ali Sheikh and I will be telling about agarose gel electrophoresis, which is used for the separation of DNA fragments. So what is basically agarose gel electrophoresis? Agarose gel electrophoresis is basically a laboratory technique used to separate DNA and RNA based on their size and electrical charge. An electric current is used to move the molecules through a gel. Pores in the gel act like a sieve, allowing smaller molecules to move faster than larger molecules. To determine the size of the molecules in a sample, standards of known sizes are separated on the same gel and then compared to the sample. That is electrophoresis. Now, what has been stated over here, that what is capillary sequencing? Capillary sequencing is basically an alternative method of agarose gel electrophoresis. Capillary sequencing or capillary electrophoresis is a process in which capillaries and electrodes are dipped into a solution of sample, and electric current is applied to the solution, causing the DNA fragments to migrate from one end of the capillary to the other. Basically from one end to the other, yes. So once the sample has been injected, the electric field is reapplied to drive the DNA fragments through the capillary. A fluorescence detecting laser built into the machine, which is the UV detector,
what it does is that it shoots through the capillary fiber, causing the colored tags on the DNA fragments to light up. Each base terminator is labeled with a different color. For instance, adenine would be green, cytosine would be blue, and guanine would be yellow, and thymine would be red. So when this happens, the color of the fluorescent bases is detected by a camera and recorded by the sequencing machine. The color of the bases are then displayed on a computer as a graph of different colored peaks, like the one shown on the upper right side, as can be seen on the upper right side. This graph basically is showing all the things I've stated, like thymine and its color and its red peak, guanine with its yellow peak, adenine with its green peak, etc. Now let's move further. What are the steps that need to be performed in agarose gel electrophoresis? First comes preparation of the gel. That is done by weighing out the appropriate mass of agarose into an Erlenmeyer flask. Agarose gels are prepared using a WV percentage solution. The concentration of agarose in a gel will depend on the sizes of the DNA fragments, which have to be separated, with most gels ranging from 0.5 to 2%, but 0.7 being optimum. The volume of the buffer should not be greater than 1/3 of the capacity of the flask. Again, the what do you call, the size of DNA fragments can be different according to the need. So then we add running buffer to the agarose containing flask. We then mix it. The most common gel running buffers are TAE and TBE with the stated amounts. Then what we do is that we melt the agarose buffer mixture. This can be done on in a microwave or on a Bunsen burner. If done on Bunsen burner, then 30-second intervals. Then we keep the flask for 30 seconds intervals, and then remove the flask and swirl the contents to mix well. Then we repeat until the agarose has completely been dissolved, after which we add ethidium bromide with the designated concentration, which is 0.5. Alternatively, the gel may also be stained after electrophoresis and running buffer. So what we do for destaining it, we again add running buffer for an equal length of time, which is 15 to 30 minutes. Then we allow the agarose to cool on the bench top in a 65°C water bath, after which we place the gel tray into the casting apparatus. Alternatively, one may also tape the open edges of a gel tray to create a mold. Place an appropriate comb into the gel mold to create wells. Now, whatever I've said has been explained in the images on the right. For instance, as can be seen, look, this is the tray on which agarose gel is prepared, basically casting tray. Then this is the remove end blocks in which we comb and submerge the gel under buffer in the electrophoresis chamber. Then we load each sample in consecutive wells, which is shown in the third image, and etc., as I've told before. So then we pour the molten agarose into the gel mold, after which we allow the agarose to set at room temperature. Then we remove the comb and place the gel in the gel box, as I stated in the image earlier. Alternatively, the gel can also be wrapped in a plastic wrap and stored at 4°C until use. It will always be stored at 4°C so that it remains preserved. Then we come on to
setting up of gel apparatus and separation of DNA fragments. We add loading dye to the DNA samples. DNA samples to be separated. Gel loading dye is typically made at 6x concentration, in which 0.25% bromophenyl blue, 0.25% xenyl cyanol, 30% glycerol. Loading dye helps to track how far your DNA sample has traveled, and also allows the sample to sink into the gel. After that, these are all the prerequisites, like we open the power supply to desired voltage, which would range from 1 to 5 volts per centimeter between electrodes. Then we're going to add enough running buffer to cover the surface of the gel. After this, we're gonna check the prerequisites. For example, attach the leads of the gel box to the power supply and turn on the power for verification that both gel box and power supply are working. After that has been done, we will remove the lid and slowly and carefully load the DNA samples into the gel. This will be done gradually. An appropriate DNA size marker would always be loaded along with experimental samples. Then we're gonna replace the lid to the gel box. We're gonna turn on the power, run the gel until the dye has migrated to an appropriate distance. After this, after that has been done, we're gonna check for representative results. After separation, the resulting DNA fragments are visible as clearly defined bands. The DNA stranded or ladder should be separated to a degree that allows for the useful determination of the size of the sample bands. The example shown in the example, DNA fragments of 765 base pairs, 880 base pairs and 1020 base pairs are separated on a 1.5% agarose gel along with a 2-log DNA ladder. The image on our right shows a solidified agarose gel after removal of the comb. Now, we have discussed all agarose gel electrophoresis. Now, these are some images showing students performing basically agarose gel electrophoresis. As can be seen in image number 1, a student is loading dye to her DNA samples. Then in the second image, a student loading the DNA samples into a well in the gel. So this is my part, and now my colleague will further explain. Of DNA fingerprinting. There are 3 applications of DNA fingerprinting. The first application of DNA fingerprinting is setting up of genetic data bank. Realizing the potential of DNA fingerprinting, genetic data bank has been set up throughout the world. Databases of the genetic fingerprints of criminals has been set up in many parts of the USA and Britain. Forensic Science Services Birmingham, Britain has been set up the world's first national DNA database where about 5 million records would be available. It has collected samples of tissues and DNA of suspected individuals has been profiled. Second application of DNA fingerprinting is immigrant dispute. More or less in every country there is the problem of immigration. Ultimately, the identity is not confirmed whether they have crossed the borders or the resident of that country. Therefore, the problem of immigrants can be solved through DNA fingerprinting. Third application of DNA fingerprinting is forensic analysis. It can be used in the identification of a person involved in criminal activities, for setting paternity or maternity disputes, and in determining relationship for immigration purposes. It is used in forensic science to identify potential crime suspects, to determine the frequency of specific genes in a population which give rise to diversity.
It is used to identify and protect the commercial varieties of crops and livestock. It can also be used to establish paternity tests. It can also be used for the personal identification. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Talha and today my topic is advantages and disadvantages of DNA fingerprinting. फर्स्ट हम देख लेते हैं एडवांटेजेस इसकी क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोवाइड्स द लेयर ऑफ फोरेंसिक एविडेंस। फोरेंसिक एविडेंस का मतलब ये हुआ कि इसका ज़्यादातर यूज़ हमारे पास वेरिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम में है, मतलब उसमें इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हमने किसी पर्सन की आइडेंटिटी फाइंड करनी है या वेरिफिकेशन करनी है तो फर्स्ट हम उसके थंब से इसकी आइडेंटिटी फाइंड करेंगे या फिर उसके हेयर या फिर उसके हेयर से, मतलब उसके बाल का एक तिनका है उससे भी हम उसकी आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि अगर कोई कहीं पर क्राइम सीन हो जाता है तो ज़्यादातर ये होता है कि कोई पर्सन अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए स्पेशल टाइप की ग्लव्स यूज़ करता है। उस ग्लव से होता ये है कि हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है, हम किसी आम उस पर्सन की आइडेंटिटी फाइंड नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट है हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ अनऑब्ट्रूसिव। अनऑब्ट्रूसिव का मतलब ये हुआ कि समथिंग दैट डजंट अट्रैक्ट मच अटेंशन, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब और हुआ। यहाँ पर इसमें हमारे पास कंपैरिजन किया गया है ट्रेडिशनल फिंगरप्रिंटिंग का और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ट्रेडिशनल फिंगरप्रिंटिंग हमारे पास जो हम आज से कई साल पहले इंक का इस्तेमाल करके जो हम ट्रेडिशनल फिंगरप्रिंटिंग करते थे, या अगर हमने कहीं पे फिंगरप्रिंट लगाना था किसी भी पेज पर इंक के ज़रिए, तो वो हमारे पास बेसिकली ट्रेडिशनल फिंगरप्रिंटिंग थी। इसके कंपैरिजन में हमारे पास जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो सबसे ज़्यादा इजी है। इजी इस तरह है कि हमें इसमें सिर्फ एक सिंपल चीक स्वैब अटैच करनी पड़ती है उस इंफॉर्मेशन के साथ जो हमें रिक्वायर्ड हो। वो इंफॉर्मेशन किसी भी पर्सन की हो सकती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी हम उसे कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है मोर देन अ क्रिमिनल जस्टिस एम्फेसिस। जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में इसकी बात की थी कि हमारे पास वेरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्राइम एम्फेसिस में ये यूज़ होता है। इस पॉइंट में ये है कि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से बेनिफिट ले सकते हैं। वो बेनिफिट ये है कि हमने अगर उस पर्सन की आइडेंटिटी फाइंड करनी है, जो मतलब इससे हम उस पर्सन की आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं जो हमारे पास कैंसर डिजीज़ में मुब्तला हो, या उसको अगर कैंसर है तो इससे हम उसकी आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं। मतलब जो बीमारियां लाइक कैंसर की बीमारी हो गई हो या इसके अलावा कोई और डिज़ीज़ हो, कैंसर की डिज़ीज़ ही हो, तो हम उससे उसकी आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि ये ज़्यादातर हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड CIA जो कंपनीज़ हैं, हर मुल्क की अपनी कंपनीज़ होती हैं, नॉट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड CIAs में, मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट है सबसे ज़्यादा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है द एविडेंस कलेक्ट फ्रॉम द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन बी स्टोर्ड इंडेफिनिटली। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमें एक महसूस जेनेटिक प्रोफाइल प्रोवाइड करता है जो किसी भी फ़र्द की शनाख्त कर सकता है, और इन प्रोफाइल्स को हमें डेटाबेसेस में इंडेफिनिट टाइम के लिए महफूज करना पड़ता है। मतलब हमें इन डेटाबेसेस को इंडेफिनिट टाइम के लिए मतलब इन प्रोफाइल्स को हमें डेटाबेसेस में इंडेफिनिट टाइम के लिए महफूज करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम ये स्टोर नहीं करेंगे तो हमारे पास डाटा पॉइंट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और हम फिर उसको फिर ज़्यादातर इंटरनेट के ज़रिए कम्युनिकेट किया जाता है। मतलब एक डाटा उधर भेज दिया और दूसरे का डाटा, मतलब ये होता है कि डाटा हमारे पास स्प्रेड हो जाता है, हम उसको रोक नहीं सकते क्योंकि वो किसी भी पर्सन की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें उसका डीएनए भी पाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हमें यह है कि हमें उसे डाटा पॉइंट्स में
डाटा पॉइंट से रोकने के लिए डाटा बेसिस में उसको इंडेफिनिट टाइम के लिए महफूज करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डज नॉट रिक्वायर अ स्पेसिफिक सैम्पल साइज़। सैम्पल साइज़ से मुराद ये हुआ कि इसमें हमारे पास ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसमें हमारे पास कुछ सैम्पल्स होते हैं जिनसे मिलके हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। वो सैम्पल्स क्या है कि इसमें डीएनए के सैंपल से हासिल होने वाला जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जो हम सैंपल्स बनाएंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सैंपल जो होंगे उससे हमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो मिलेगा। अब उस जेनेटिक मटेरियल को हम जो आजकल की टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं उनके ज़रिए हम उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें वेरिफिकेशन जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि एक जो हमारे पास स्मॉल सैंपल है वो भी हमें वही डाटा प्रोवाइड करेगा जो हमें बड़ा सैंपल प्रोवाइड करेगा, और उस डाटा प्रोवाइड करने में हमें कोई भी नुकसान नहीं है। मतलब अगर हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ज़ख़ीरा करना है एज अ स्टोरेज पोटेंशियल, तो उस पर भी हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा, मतलब हमें काम करने में कोई भी रुकावट प्रोड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास पहला पॉइंट है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, और जो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अमल है इसके दौरान हमारे पास जो सैंपल्स हैं 70 to 80% हमें ख़राब होने का खदशा है। मतलब इससे वो ज़्यादातर जो है सैंपल्स डैमेज होने का ख़तरा है। अगर हमारे पास सैंपल डैमेज हो जाता है जो उससे ये होगा कि हमारे पास वो सैंपल बिल्कुल यूज़लेस है, हम उससे कोई काम नहीं हासिल कर सकते। एक तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। दूसरा ये डिसएडवांटेजेस है कि ये जो प्रोसेस है सैंपल्स क्रिएट करना, ये प्रोसेस हमारे पास इटसेल्फ जो है वो कॉम्प्लेक्स है और टेडियस है। मतलब इसमें हमें काफ़ी मुश्किलात पेश करनी पड़ती हैं, और ज़्यादातर जो है ये हमारे पास अमल जो है वो यूज़लेस हो जाता है, मतलब इसमें हमें कामयाबी हासिल नहीं हो पाती। थर्ड पॉइंट, इसमें हमारे पास प्राइवेसी का इशू आ जाता है। प्राइवेसी इशू यहाँ पे ये हुआ कि हमारा ये जो जितना काम है सैंपल्स क्रिएट करना या सैंपल के ज़रिए जेनेटिक मटेरियल क्रिएट करना और उनको फिर हम डेटाबेसेस में स्टोर करना, तो इसमें हमारे पास ये होता है कि जो जितना भी काम है ये हम एक लैब में कर रहे होते हैं। मतलब ये जो साइंटिस्ट होते हैं मेडिकल के, ये लैब में सारा परफॉर्म किया जाता है। मतलब और इसमें ये होता है कि ये जो जितनी भी हर पर्सन की अपनी अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, तो अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहीं से लीक हो जाए तो वो उन सब के लिए उसका असर सर पे पड़ता है। मतलब तमाम लोगों पर इसका असर पड़ता है। मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसको लीक नहीं होना चाहिए, अगर वो लीक हो जाती है तो वहाँ पे मौजूद जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जो लैब असिस्टेंट हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, उनकी जॉब पर एक तो असर पड़ेगा। इसके अलावा जो है वो कंपनी जिधर जिधर वो लैब का काम हो रहा है उसमें उसको ज़्यादा नुकसान होगा। एक यहाँ पर इसका प्राइवेसी इशू का मतलब ये है। मतलब ये है कि वही जो मैंने अभी बात रिपीट की कि अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है तो वहाँ पर जितने भी वही काम करने वाले लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं उनके लिए उनकी इंश्योरेंस एक तो रुक जाती है और फिर उनकी जॉब का मसला भी बन जाता है। और जो लास्ट हमारा डिसएडवांटेजेस है सबसे इम्पोर्टेंट, वो ये है कि जो हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये 100% एक्यूरेट नहीं होता। जैसा कि ऊपर मैंने बात की थी फर्स्ट पॉइंट में कि ज़्यादातर सैंपल्स हमारे पास यूज़लेस हो जाते हैं, वर्किंग 70 to 80% में कामयाबी होती है। यही बात है कि इसमें ये जो हमारे पास 100% एक्यूरेट नहीं होता, एक्यूरेट होने का मतलब ये हुआ कि इसमें कंटेमिनेशन और फॉल्सिफिकेशन पाई जाती है। कंटेमिनेशन का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से पोल्यूशन क्रिएट हो जाना, गंदगी, सफाई ना रहना। और फॉल्सिफिकेशन ये है कि हमें इसका रिज़ल्ट या तो नेगेटिव मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पॉजिटिव मिले, नेगेटिव रिज़ल्ट भी हमारे पास मिल जाता है। तो इस केस में ये जो है वो फॉल्सिफिकेशन भी क्रिएट होगी। यहाँ तक कि गलत तरीके से जो हमारे पास टेस्टिंग मेथड है हमें या तो पॉजिटिव या रिज़ल्ट देगा या तो नेगेटिव प्रोवाइड कर सकता है। यही मेरी एडवांटेजेस थी ओवरऑल, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल आई हैव टू से।